आप बोलते जाइए, कुछ थोड़ा सा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, बात करिए आप लोग। उनकी फोटो में मेरा हैंड फुल हो रहा है पीछे। हाँ मैं यहाँ भी चल गया से कपड़े पहने। सीता बन जाता है वो कोई इतना वो खास नहीं। सीता आई थे कोई सा भी बनाओ तो इसी की जैसा बनता है। जैसे जोड़ा वैसे जो जोड़ा बना वो कोई अलग वैसे ही बनता ही है। उसका डिजाइन वही होता है ना। सेशन चल रहा मधुबनी के जाने माने आर्टिस्ट हैं और चित्रकार होने के साथ साथ वो हमारे समक्ष एक भावपूर्ण विद्यापति गीत पर लोक नृत्य प्रस्तुति पेश करेंगे। और अब मैं आप सबसे चाहूंगी कि कृपया पहले तो सभा की गरिमा बनाए रखें और तालियों से रमेश मंडल जी का स्वागत कीजिए कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मोरा रे अंगना
से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चाय ब्रेक के लिए एक बार बाहर आ जाए, और चाय ब्रेक 10 से 15 मिनट का है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसके बाद द टी ब्रेक विल बी फॉलोड बाय फैशन शो दूरवा। सो आप अगर छूना नहीं अपना समझकर शोलों से कहीं गरू हूँ मैं। झूमो तो मैं त्योहार हूँ, विचलूं तो मैं अंगार हूँ। अपमान की जो बात हो तो विभत्स मैं संहार हूँ। अपने मान पर अड़ी हूँ मैं, अपने साथ खुद खड़ी हूँ मैं। कोई पत्थर मुझे क्या काटेगा, अटूट हीरों की लड़ी हूँ मैं। आज चलो मोड़े कथा पृष्ठ उस युगांतर नारी में, जिसके सतीत्व की रक्षा में स्वयं कृष्ण अवतरित थे साड़ी में। नमस्कार, वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी में आप सभी का स्वागत है। और we are elated to announce Durva, a fashion show by the designer Kartikeya Pandey, which is an attempt to contextualize the elements of hope, empowerment and aesthetics from the Indian textual and oral traditions, presenting a dance followed by a fashion show.
Thank you so much, Kartikeya, for that wonderful show. I'm sure all of us have been mesmerized by the surreal performance that we just saw in front of us. And now, to felicitate Kartikeya and the whole team, I request Professor on the stage. She's the project director of Nari Samvad Prakalp. I also request Srimati Vibhaja, she's an entrepreneur, she's come from Kathmandu for Vaidehi, to please come on the stage and felicitate the designer. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Professor Jatu. And again, I congratulate this team for this wonderful show in front of us. All of you look absolutely mesmerizing, and there's no words to put how much must have taken into putting this performance, and you guys look surreal. Congratulations. So now we move towards the trail goes on, and now we come to the valedictory ceremony. And for the valedictory speech, I request Swami Shyam Chaitanya ji to please come on the stage and share a few words with us. स्वामी जी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं कुछ शब्दों में, तो स्वामी जी ने अपनी विद्यालय से पूरी की. उसके पश्चात उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में कुछ समय वो प्रोफेसर रहे. उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक में 1 दशक काम किया, पर दुनियादारी में मोह माया में मन ना लगने के पश्चात उन्होंने स्पिरिचुअल कॉलिंग को सुना और ये सब छोड़कर वो दूर गए ऋषिकेश. और तब से स्वामी जी वेदांत के, वो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं, तो वो वेदांत स्टूडेंट हैं. एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू अमंगस्ट अस सर. प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस. Respected Sushma Jati, Sita ji, all other friends, students. I think you have had a wonderful time here, watching many of the artists who are participating here, watching their paintings and the theme of Sita. Many of you also watched some cultural events, including the last one, which to my mind is not exactly fitting, but is okay, part of life. Because generally such events are a kind of tapestry of several things, and I'm sure you had a wonderful experience. The focus of this event was semi-intellectual, partly cultural, partly social, was the divinity of Sita. And those of you who actually watched the film, watched the pictures, the paintings by very enthusiastic, very skillful, motivated, dedicated, mostly women artists. I'm not sure if there were also a few male artists, but mostly I was very, very pleased to see that overwhelming majority of the artists were on the theme of Sita. But this particular exhibition was not fixing any baseline or rules as to what to be painted. So in a way, it was a creative expression of how people related to Sita. So I saw that all the
because to be able to write a poem, to be able to do any painting, you need to imagine, you need to sort of give a bent to your creativity. What I found very interesting is that they have interpreted what they felt about Sita. They have given expression to how they related to Sita. The outcome was splendid. The outcome was that these women artists have given expression to Sita as the central motive of Ramayana. Even though the name is Ramayana, the paintings have beautifully depicted the actual central character of Ramayana, which is the much neglected Sita. But if you look at the life of Sita, we have had a lot of discussion, and I'm not going to repeat any of this. It's mysterious. She chooses Janaka as her father. Do you know who is Janaka? If you look at Brihadaranyaka Upanishad, he used to organize a lot of seminars, lot of dialogues amongst the learned pandits like Yajnavalkya and Gargi and others. And once he approached Yajnavalkya for the ultimate knowledge of Atman, and he was always giving 10 times more gifts, and finally, when he got to know about Atman, he handed over everything. He said, my kingdom is yours, my gold, my house, my cattle, everything is yours, because you have given me the ultimate secret about what is Atman. And Yajnavalkya was a greater teacher. You know what he did? He did not run away with the wealth. He said, yes, you have given everything to me. Now I am giving you the responsibility of managing them. So you are a king, but you are my servant. So Janaka is also quoted in Bhagavad Gita, where Lord Krishna is explaining to Arjuna, Kaha bhag jaoge? If you run away without doing your karma, there are two words he uses which is important for the young boys and girls. काम से भागने पर कोई सन्यासी नहीं हो पाता. भगवान कहते हैं मिथ्याचारः स उच्यते. क्यों? क्योंकि आपके मन से संकल्प विकल्प का अस्त नहीं हुआ है और आप भाग गए. अहंकार वशतः माँ से लड़कर, भाई से लड़कर, पापा से लड़कर भाग गए. फिर क्या होता है कि मैं संन्यास ले लिया. जब आपने कहा मैं संन्यास ले लिया, वहाँ पे संकल्प विकल्प आ गया, अहंकार पुनर्जीवित हो गया और आप मिथ्याचारी हो गए. भगवान कहते हैं बल्कि अपना काम करो, लेकिन निष्काम भाव से करो. फलासंग को त्याग कर दो. कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो मनोवृत्ति है उसका भी त्याग कर दो. ईश्वर अर्पण विद्या जीवन यापन करो. फिर मैं आपके अंतःकरण को शुद्ध कर दूंगा. आपको हम ज्ञान के मार्ग में आग्रही बना दूंगा. फिर अधिकार आ गई, समझमादि सत्य सप्तति आ जाएगी, विवेक वैराग्य. फिर आप जब पढ़ेंगे उपनिषद समझ में आ जाएगी. भगवान वहां पे भी कहते हैं कि आप क्या जनक से ज्यादा ज्ञानी हो? नहीं, तो लोक संग्रह के लिए काम करो. ज्ञान भी हो गया तभी काम करो. So Ramakrishna Paramahansa, there is the story that one man who had 4-5 children, he was in his late 20s, landed up in Dakshineshwar, and he said, Thakur, I want to be your sevak. He said, शादी हुआ है ना? Children, who is taking care of your children? नहीं, मेरी बीबी अपने पापा के घर चली गई, वो उसका देखभाल कर रहे हैं. He said, look at this boy. He has run away from his house. He got married, gave birth to a lot of children. Now he calls himself. Can somebody tell the boys to be a little peaceful inside? So that's how Ramakrishna kind of chided that guy. He shouted at him, do your responsibility. Now look at Sita. She choosing almost a sarvagya, atmavid. इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता था. शरीर में आत्मबुद्धि उनका नहीं था. जनक संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त थे, तभी उनको पिता के रूप से चुनी, नॉट एज बायोलॉजिकल फादर. और किनको पति के रूप में चुनी? परमात्मा को चुनी. फिर हमें जिंदगी में छोटे छोटे समस्याएं आते हैं, हम रो पड़ते हैं, गुस्साते हैं, चेयर टेबल तोड़ देते हैं, सेलफोन तोड़ देते हैं. She chose a devil, a demon, who is a very confused. He had 10 heads, and I say that Ravan is an embodiment of what is called
मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 10 हेड है ना, 10 चीज सोचता था वो। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो 4 वेद और षडंग का अध्ययन किया था, इसीलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे, उनको कोई समझा दें। Somebody has to tell them that they can stop conversing there. So, but with all his wisdom, he was trying to harm people and he kidnapped Sita ji. Sita ji then appeared. Those of you who did not attend the seminar in the morning and the afternoon, she is presented as a vulnerable, helpless woman, but she doesn't treat Ravana as a powerful person. वो तो घास की तरफ एड्रेस करके कहती है, अरे तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो? You know, she doesn't take Ravana seriously. She has the power of silent resolve, that sankalpa, that dharya, that shanti. She was an embodiment of that, because of which Gandhi, and I saw one of the paintings where Gandhi is, that's a beautiful painting. Thank you, whosoever is the painter, because Gandhi in fact used Sita as an embodiment of passive resistance. अपने धर्म के मार्ग से विच्युत ना हुई, ना जो अधर्म है शक्ति के साथ है। रावण का जो अधर्म है ना, वो सशक्त था ना, बहुत सारे बल था उसके पास, लेकिन सीता जी उससे बिल्कुल भी कोई आग्रह प्रकाश नहीं किया। आजकल यू सी लॉट ऑफ गर्ल्स आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज द बॉय इज वेरी रिच, is very powerful. Yeah, life is all about compromise. Sita didn't do it. And Sita is a mother, she raises her own children, she doesn't complain. Who is actually inferior? If you look at whole of Ramayana, when Hanuman says, Mother, आप तो ये रावण को 2 सेकंड में खत्म कर देंगे, आपका जो ऐश्वर्य शक्ति है वो हंसती है, नहीं राम को बुलाओ। जैसे कह रहे हैं बेचारा रोएगा, नहीं सब खत्म कर लूं, तो बेचारा उसको कोई नहीं पूजा करेंगे, बिकॉज शी इज पराशक्ति, शी इज निमित्त, हर चीज वो कराती है। इट्स लाइक द मदर अलाउज द बेबी टू डू समथिंग एंड टेक द क्रेडिट। माँ हंसती है, हाँ बेटा, मम्मी मैंने किया, माँ क्या कहती है, हाँ बेटा तुमने किया, जबकि सब कराती है वो। बिकॉज जो मातृशक्ति है, तो पराशक्ति है, उन्हीं का सब खेल है। तो आई वाज टेलिंग इन द मॉर्निंग, एंड दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक एट इट. And we had a discussion about Kashmiri Saivism, we had a discussion about Saiva Siddhanta of Karnataka and of Tamil Nadu, and Veera Saiva Darshana of Karnataka. So we have slight differences. They have Bheda in Veera Saiva, we have Abhasavada in Kashmiri Saivism. But Sita ji को सचमुच समझना है तो आगम शास्त्र का थोड़ा पठन करने पर बहुत सुंदरता पूर्वक आप समझ पाएंगे। लेकिन आश्चर्य ये है कि आपके बहनों ने, your sisters who painted those Sita icons may not have read these shastras, but they have beautifully interpreted the spirit of these tantra shastras, these agama shastras, by depicting Sita as the central motive. But when I gave the talk, some boys and girls were watching it on YouTube, and I got a few comments I want to share with you. One little girl is asking, okay, Swamiji, you gave a very good speech, but why not give your next speech on liberation of Sita? I said, what do you mean by liberation of Sita? Sita to liberate ho gayi. He said, no, Sita today in our society is kind of in difficult circumstances everywhere. So I personally think that when you are going forward, because this is the last conversation we are having, those of you sisters who have done these paintings, you could plan now in future whether you want to have the theme of your paintings in future as the green Sita, like the ecological Sita. Because look at Sita, her ability to cope with Ashokavanam. If you go to Sri Lanka, I have been there, it's actually a jungle, and there are no human beings around where she was sitting, and now they have a temple there. So she lived with nature, she negotiated with nature, and she preferred to be in jungles with her husband, isn't it? So because we have a lot of environmental degradation, and I saw one painting where, forgetting her name, the sister who did the beautiful painting where Sita is colored, it's Param Brahman, and then you have the trees that are colored as green, but everything else is black and white, Ram, Sita, they are kind of faded.
Because I said, why did you do it? And she explained, because I wanted to be forced to do things. The green leaves symbolize life. And Sita symbolizes, yeah, she's sitting here, yes, thank you. She's done a wonderful painting. So I think in future going forward, you can do another idea I was thinking, that you have painted and you have come. Imagine 20, 30, 40 of you painters getting together and doing a Sita laboratory where you sit for over 2 days, 3 days, and then you paint on one single theme, all of you, okay? Like for example, Sita and ecology, or Sita as on, somebody told me about female infanticide or feticide in Bihar and other parts, right? हम सीता का पूजन भी करते हैं और you know the funniest part of Kali Yuga is that हम जो चाहते हैं हमारे मन उसका परिपंथी होते ही रहता है. हम चाहते तो कुछ हैं लेकिन उसका विरुद्धात्मक कर्म भी हम करते हैं. तो हम सीता जी का पूजन भी करते हैं, यहाँ इतना बढ़िया सेमिनार भी हुआ, लेकिन हमारे बीच में हम अपने बेटियों को, अपने माओं को, अपने बहनों को जो प्यार देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं. भले ज्ञान हो लेकिन वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है. ठाकुर कहते थे भागवत को निचोड़ लो, एक बूंद भी रस वहाँ पे नहीं है. भक्ति रस तो व्यवहार में है, जीवन में है. तो जो सीता के प्रति जो हमारी भक्ति है उसका स्फुरण हमारे एवरीडे लाइफ में होना चाहिए. इसीलिए आई थिंक इट्स सो विद दैट आई वांट टू कंक्लूड दैट टू थिंग्स. एंड द फनीस्ट थिंग इज दैट इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, फैशन शो वाज ब्यूटीफुल, but I was sitting with Sushma ji and I was thinking, if somebody takes a picture and says Sita in fashion mood, tomorrow it comes in some Twitter, you're gone, right? Big embarrassment. So you got to be very careful now, because you are discussing. Because people are there to pull your legs. You know that? You're surrounded by people who want to misunderstand you, who want to pull your legs. So you have to be very, very careful. But going forward for next year, wherever you are doing the next event, I hope that you are taking up, whether you want to take up the issue of ecology or you want to take up one of these issues, let's not just celebrate Sita. Yes, we would, but let's also make Sita part of our lives. I think that's the only way to go forward. Thank you for a wonderful contribution and your attention. I actually learned a lot watching these beautiful paintings. I came from Rishikesh, शास्त्र पढ़ के मैं थक गया था. मैं बोला थोड़ा जाऊँ लोगों से मिलूँ, बट मुझे ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छी शिक्षा मिली. I saw these beautiful paintings. I connected with people. I'm really grateful to all of you. Thank you. Jai Sita. The journey of Vaidehi has been one full of adventure, mesmerizing beauty, a lot of things that came to us unexpectedly, but overall we have cherished it. And in this same journey, we want to felicitate an artist that has devoted all her life to Madhubani Mithila painting, which is, so basically Mithila painting is more popularly known as Madhubani painting, but it's the same thing. And amongst us, we have an artist who is going to receive the Lifetime Achievement Award by CSTS. So I want to introduce the artist who is going to receive a Lifetime Achievement Award, Srimati Shanti Devi. I'll introduce more about her. Shanti Devi was born in 1957 in a village of Madhubani district in Bihar, and after losing her mother at a very early stage, she was brought up by her father, who was a Pandit. Later, Shanti Devi, who is also Padma Shri, showed her profuse love, affection and personal caring for Devi, who later became her ideal guru. Now we come to the artistic journey of Shanti ji. She was identified and picked up by Bhaskar Kulkarni, who is gathering monuments for widespread promotion of Mithila painting. And at an age of 7 to 8 years, he found her. He brought one of the work of Shanti of 25 paisa at that time,
which was her first earning in life, but a great inspiration and motivation. At the age of about 17, she married to Vidyanand Jha, who had agriculture as his occupation. It was very hard time for Shanti ji to continue agriculture. It was her own courage and strong determination which supported Shanti ji to continuously strive for improving her artistic progress. Shanti ji was associated with many eminent organizations of state and national repute active in the area of handicraft works, which included Craft Council of India, Dastakari Heart Samiti, Kala Madhyam Bangalore, Crafts Council of West Bengal, Craft Council of Maharashtra, Upendra Maharathi Sansthan, BanglaNatak.com, among others. She has put up many shows, exhibitions, and workshops, starting from Milan, organized by Export Council of India, workshop of 100 folk artists organized by Art, Culture and Youth Department, Government of Bihar, Mithila Chitrakala Mahotsav 2016 by Upendra Maharathi Sansthan, and the list goes on and it does not end. And Shanti ji has also received state award by Government of Bihar in 2008 and 9, National Merit Certificate 2012, and Rashtriya Ahilya Devi Samman in 2018. हमारे बीच में एक ऐसी सम्मानित चित्रकार जिसने अपने पूरे जीवन को मिथिला चित्रकला को डिवोट किया, उनका होना हमारे लिए सम्मान की बात है। और उन्हें सम्मानित करने के लिए to felicitate Shanti Devi ji, I would like to call upon the stage Mrs. Jennifer Moragoda and Mrs. Julia G. Pratt. Ma'am, please come on the stage and felicitate Shanti Devi ji. Shanti Devi. I hope you all have seen the exhibition of the paintings. Yes? Wonderful. And I know we have a lot of the artisans in the audience as well. So I would just like to say that it really gives me a lot of pleasure to be able to give a Lifetime Achievement Award to Shanti Devi, who is a remarkable artist and keeping traditions alive, which inspires even the newer artists in the gallery as they innovate in new modern settings. But yet we still need to keep the heart of the tradition, because if we go too far away from the tradition, it loses its identity and its meaning. So I have seen your paintings as well, Shanti Devi, in books, and I can tell you that they inspire so many people around the world. And what I think sometimes happens is sometimes brilliance and genius are appreciated more outside your own country than within your own country. That sometimes happens. But I think Mahbubani painting, although it has gone through many phases over time and evolves with the changing times, which is important because all of art has to evolve and stay. But I feel that there's more and more appreciation of these traditions, which are really our identities, you know? I mean, I really get inspired when I see the work of these senior artisans who still live in Madhubani, because they're still linked to that atmosphere of the origin of that art, which is very, very old, and with nature, and with the wildlife, and then of course with the rituals of life, the everyday life, the communal village life. There are so many things that are there and that are reflected more in the traditional style, at least for me. Maybe I'm a little bit old-fashioned, but I think that these are traditions that have been honed, you know, year after year, century after century. So they're very strong, and we really need to recognize them. We're very lucky that we still have people like Shanti Devi around who is linked to those traditions, who can take us back, because sometimes, for instance, in Sri Lanka, we have a lot of traditions that have been lost
because we're a smaller country, and therefore we have less artisans. So as they get old, or they go to the next place, and then there's interest after that point, like, oh yes, that's such a beautiful art form. I would love to do it. But then there's no expertise left. So I think with changing modern times, especially, I think maybe it's still so here, I don't know, in the Madhubani tradition, even because we have a lot of people who live in urban areas now, and even in Delhi and outside of Bihar. What happens is, in the past, like what is so nice in many of the traditions in India, is that you have it from mother to daughter, daughter to granddaughter, like that. It goes on and on and on. And there's just something really beautiful about traditions that are within a family, because it's mixed with a love and also a similar way of thinking. So with more and more people doing this who are not from a traditional family, the style will definitely change. But we should never ever lose the heart of Madhubani art, and that's why I'm so happy, Shanti Devi, to be able to recognize you. I think that we should put all of our senior artisans on a pedestal and really try to learn from them, because they have so much to share with us. They're also older, wiser. They have seen a lot in the world. And we must really, really value our artists and people maintaining the tradition. So those are my words for now. I think we're waiting on the award. Let me just check. थैंक यू सो मच मैम. और अब मैं शांति जी अब मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप भी स्टेज पर आएँ और 2 शब्द कहें. मैं समझ रही हूँ आपकी उम्र बहुत है, पर आपको जो जैसा समझ आ रहा है आप लोगों में अपने विचार प्रस्तुत करें. और अवार्ड सेरेमनी, सारे अवार्ड साथ में, क्योंकि जो हमारी चित्रकला प्रदर्शनी है वो भी एक कंपटीशन का ही पार्ट थी, तो उसके भी जितने भी विजेता हैं, सबके सारे विजेताओं को अंत में साथ में सम्मानित किया जाएगा. शांति जी प्लीज. A big round of applause for her. हमारे सविता जी इतना दूर से हमारे बुला करके, सब बच्चे लोग जितना कलाकार है सब आगे बढ़े. इनको बढ़ाने के लिए धन्यवाद. हम खुशी है. हमको तो जो मिला, देश जोखे हैं बहुत कुछ. कुलकर्णी भास्कर को नाम ले रहे थे, हमको भी याद आ रहे थे. कुलकर्णी भास्कर, उपेंद्र भारती, सब कुछ मैं देखा है. बच्चे से मैं काम करती हूँ. सब आप बच्चे लोग जहाँ जहाँ पे दिल्ली के लोग बना रहे हैं, राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, हमको बहुत, मद्रास से वो बच्ची आई है. हमको बहुत खुशी मिल रहा है. मधुबनी पेंटिंग को, मधुबनी मिथिला को बहुत धन्यवाद देते हैं. ऊपर से सविता जी को इतना स्पॉन्सर सबके बुला करके सबको मिला चला रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू. वो समदौन मैं सही से बोल पा रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर वो भी खुद आके बता देंगी कि ये एक तरीके का गीत होता है और इसको क्या कहा जाता है, इसकी क्या खासियत है, वो खुद अभी आपको आके बता देंगी. और मैं अब इनवाइट करना चाहती हूँ सुप्रिया झा जी, वंदना झा, नंदिनी मिश्रा और वंदना सिंह जी को कि वो आएँ और मधुबनी की छाप हमारे समक्ष दिल्ली में रखें. प्रणाम. आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आके और इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए. और आज समदान क्या है, पहले मैं उस पर चर्चा करती हूँ कि मिथिलांचल में जब बेटी विदा होके जाती है तो समदान गाया जाता है. तो एक तरह से समझिए तो ये अंत का गाना है. सबसे मतलब बेटी को हम जब दूसरे घर विदा कर देते हैं तब का गाना है, तो वही समदान है. तो इतने अच्छे से सारा कार्यक्रम हो गया और अब विदाई का समय आने वाला है. तो वही ये बच्ची बोल रही थी कि समदान गाएंगे हम लोग. तो अभी कुछ समय है तो हम लोग थोड़ा सा 1-2 और गाना गा के उसके बाद समदान गा के फिर ख़त्म करते हैं.
तो सीता जी हम बेटी थी। मैं मैथिली में भी बोलूँ, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो सीता जी का मायके था, जैसे आप समझ रहे हैं, मिथिलांचल में। हम वहीं के बेटियां हैं सारे, बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग उसी का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि सीता जी हमारे यहाँ की बेटी हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कुछ उनके संदर्भ में गाना गा रहे हैं। सीता जी हमारी बेटी हैं तो राम जी हमारे पाहुन हो गए, मेहमान हो गए, बहनोई हो गए, बहन के हस्बैंड हमारे बहनोई हैं। तो हम लोग इस बात की खुशी मनाते हैं वहाँ पे कि हम लोगों के बहनोई राम जी हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, हम सारी बहनें मिलके एक गाना सुनाते हैं, ठीक है? सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला के नाता सो सिया जी बहनिया, मिथिला के नाता सो सिया जी बहन माँ। मिथिला के नाता सो सिया जी बहनिया, सिया जी के नाता सो राम जी पहुन माँ। मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सरसों के फूल संग सिया जी बहनिया, सरसों के फूल रंग सिया जी बहनिया। तीसी के फूल संग राम जी पहुन माँ, तीसी के फूल संग राम जी पहुन माँ। दोनों के जोड़ी कमाल हो, राम लगी है पहुन माँ। दोनों के जोड़ी कमाल हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लगी है पहुन माँ। सविता झा खान दीदी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को गाने का यहाँ पे मौका दिए। और उनको एक गाना मेरा बहुत पसंद है, हम लोगों का सोहर, तो जो उन्होंने बार बार हम लोगों से सुना है। तो मैं दो लाइन बता दूं कि मिथिलांचल में सोहर बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। तो हाँ, और बच्चे के जन्म में, उपनयन में, मुंडन में, इस सब में सोहर गाया जाता है। तो मैं एक बार वो दीदी के पसंद का एक सोहर सुना देती हूँ, उसके बाद हम लोग समदाउन से ये कार्यक्रम का अंत करेंगे। की लब
और अब हम बढ़ते हैं आगे क्रम में और हम अवार्ड सेरेमनी की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं शांति जी को स्टेज पे निमंत्रित करूंगी कि वो आए और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाए। I also request Julia ma'am to please come on the stage and felicitate ma'am. If please kindly join us on the stage. पैसे भी है क्या? कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने की ओर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि CSTS सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम्स के जो भी वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे आए। सबसे पहले निवेदिता जी, आई रिक्वेस्ट सविता मैम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। और कमल किशोर जोशी जी, I repeat, Nivedita ji, the audience to please applaud while I take the names of the volunteers because that's going to motivate them. Pragya Singh, Pragya Singh, आशु जी, भूमित यादव, you can see how hardworking our volunteers are because he's holding the tray while his name is being announced. Siraj Ghani, Navdeep Singh Bihal, same goes with this person. Navdeep Singh Bihal. Some of the volunteers are not here between us right now, but Parisha Thukral and Siddharth, Ashu ji, and then me, Tejasvi. Should I come?
I'll keep this with me. In the meantime, I'll announce the other person, Ashu ji. And Nivedita. Nivedita, I assume, is not in the audience. So in that case, we'll move on and we'll go to the participants of this exhibition, international exhibition of Mithila paintings, people who made this exhibition worthwhile, who put all their efforts with their patience and dedications into each painting. It's a sight to behold. Every single painting must have taken so much hard work and patience, and the beauty that each painting is reflecting, the aura of Vaidehi that each painting is reflecting is a sight to behold. So now I would like to request our participants, the participants because of whom this exhibition was possible, to please come on the stage, and I would request again Sushma ma'am, Julia ma'am, because Julia ma'am and Jennifer ma'am were the judges of the show, so of the exhibition. So I request all. Okay, so sir is suggesting that I call out 5 participants at a time so that people are lined up. Arpita Desai, Swati Singh, Neetu Gulati, Shrestha Vasoya, Trivenika Ray. A big round of applause for these participants. I request the judges and the guests to please felicitate the participants. Arpita Desai. Swati Singh. Neetu Gulati. Shrestha Vasoya. Trivenika Ray. Mani Mallika Buddhiraja. Priya Vich Kakkad. Kirti Mule, Rashmi Dhar, Anju Agrawal. Akriti Jha. Akriti Jha. Akriti Jha, Mani Mallika Buddhiraja, Priya Vich Kakkad, Shruti Subramaniam, Kirti Mulye, Rashmi Dhar. Please be seated. Please be seated. Rashmi Dhar. Amrita Ravikumaran.
पल्लवी पाटिल, श्रुति सुब्रमण्यम, अंजू अग्रवाल, पल्लवी पाटिल, अनुपमा प्रिया, निशा घाला, कुमकुम झा, कंचन झा, प्रीति दलवाड़ी, कविता पाठक झा, अनुपमा प्रिया, निशा घाला, कुमकुम झा, कंचन झा, प्रीति दलवाड़ी, कविता पाठक झा, डॉली ठाकुर, बॉबी झा, वंदना सिंह, नूतन मिश्रा, उपासना प्रिया, शैलजा सरोज। बॉबी झा, डॉली ठाकुर, वंदना सिंह, उपासना प्रिया, नूतन मिश्रा, शैलजा सरोज, अमरजीत कुमार, निभा प्रिया, ज्योति झा। So these were the participants who were able to physically be here amongst us, while a lot of other ऊर्जा से भरपूर पेंटिंग है। सो बहुत खास है ये, और आकृति जब आएंगी स्टेज पे उनको बुलाया जाएगा, इस पेंटिंग के बारे में बताएंगी कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस पेंटिंग की अपनी एक यात्रा रही है उसमें इनको बनाया है। बहुत बहुत बधाई आपको आकृति। मैं जजेस से आग्रह करूंगी वो दूसरा नाम है बताएं। फिफ्थ वन, extraordinary dynamism of essence. You know, it's got the essence of the ideas, the landscape of the Ramayana, and you can see the elements of nature in the cross bands, and also it generates the idea very well of a Sita rejecting negativity and poison. It radiates away from her. So though it is dark, it is also bright. Meditated. So it's very much has Buddhist elements in it as well, which is quite interesting. किया गया है। सो नेचर की, प्रकृति के चित्रण के साथ साथ भी जो इसमें जिस तरीके से और एक प्रवाह लगता है, जो प्रकृति के साथ एक प्रवाह है, वो बहुत ही खास बात है इस पेंटिंग की। अदिता देसाई को बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल से है It really is what reminded me of that element. But also you have a sense of Sita's essence in you. You feel it. And for me, each one of these canvases, these 6 canvases, I know the Sita story, but I don't know the deep spirituality that all of you understand. But a painting speaks to you, regardless of your religion. And so, and drama, you've got extraordinary colour composition and complementary colours with the blues against the red, and you've got the demonic side of Sita and then the gentle side of Sita. You've got the both of her personalities here.
it's extraordinarily powerful piece. And was there anything you? I mean, this struck me from the beginning. Again, this is one of the first pieces that struck me when I came into the gallery on the 10th on Sita's birthday. Feeling, you know, and the little clouds. I mean, there's so much attention to detail. Even everything on this has some detail. The shield has a lotus, which tells us that peace is better than war, but that you have to have justice. बहुत खास बात है इस चित्र के बारे में। कृति हैदराबाद से है मेरे ख्याल से, हैदराबाद से है ये कृति, और उन्होंने जो लिखा था लेफ्ट साइड पे लिखती हैं बाएं तरफ जो पैलेट्स हैं वो खुश हैं क्योंकि सीता की जो है वो शादी हो रही है राम के साथ, लेकिन जो राइट साइड में है यानी जो दाईं तरफ है वो रिग्रेट कर रही हैं। सीता का दो भाग है, वो रिग्रेट कर रही हैं, मतलब पछता रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि उन्होंने जो कुछ एक कहानी है कि उन्होंने कुछ इसको पैरट्स को कुछ तोता को उन्होंने बंदी बनाया था, केज किया था, एनकेज किया था, जो उसको रखा था। शायद उन्हें लगता है कि उस तोता के श्राप की वजह से उनकी ये मतलब हालत हुई, और उनको ऐसा लगता है कि अगर उस तोता को उन्होंने रिलीज कर दिया होता तो उनको राम ऐसे छोड़ते नहीं। सो राम का जो अबेंडनमेंट है उनको उनके लिए ऐसा लगता है कि इस तोते ने उनको श्राप दिया है, क्योंकि उसने उस तोते को उन्होंने बंदी बनाकर रखा था। ये पद्म पुराण से इन्होंने जो है ये रेफरेंस लिया है, और पद्म पुराण के रेफरेंस के बेसिस पे इन्होंने दो तरह की सीता बनाई है। एक सीता जहाँ बहुत खुश है वेडिंग के अवसर पर बाईं तरफ, और दूसरी तरफ जहाँ सीता सोच रही है कि अगर राम ने उनको क्यों छोड़ा, और पद्म पुराण के रेफरेंस से ये इस तरीके का मून है और इधर सन है। ये इनकी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है।